Hello. Hi. Good evening, everyone. Can anyone tell, am I audible? Can you see me? Hope you are doing fine. Once again, good evening, everyone. My name is Indu Malik. I am a fertility counselor and couple therapist with Fertility Dost. Very warm welcome in today's session. Today's session is about counseling, the role of counseling in फर्टिलिटी जर्नी. काउंसलिंग कैसे होती है और कैसे हाउ यू इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. पहले थोड़ा समझेंगे कि काउंसलिंग है क्या एंड फर्टिलिटी काउंसलिंग is different from normal mental health counseling because in other counseling what happens, clients come with a particular issue, कुछ भी प्रॉब्लम लेके आते हैं और उसका कुछ सोल्यूशन दिया जाता है. बट यहाँ पे क्या होता है कि काउंसलिंग प्रमोट्स रेजिलेंस. द एम ऑफ द fertility counseling is to maintain the positive sense of self, to do some kind of assessment. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ queries related counseling, please feel free to ask. अगर अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो बाद में भी पूछ सकते हैं. I will be happy to answer your questions. So, first we need to understand normal counseling की जरूरत कब पड़ती है. Whenever any kind of crisis happens in person's life and not able to manage within the available resources, then person can seek professional counseling. Every individual is different and every individual's situation is different. जब लगता है कि अपने से अकेले से काम नहीं हो पा रहा है तब काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. फर्टिलिटी काउंसलिंग में क्या है कि people are not aware what actually it is because it is very overlooked profession in our country. बाहर तो काउंसलिंग मैंडेटरी होती है बट अभी इंडिया में इतना मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ को हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. तो आवर मेन फोकस इज ऑन ट्रीटमेंट ओनली. Fertility counseling can help couples even if they are trying naturally or opting for the treatment. Naturally क्या होता है, कभी कभी they have some kind of conflicts or they have not a very sexual health is good. तो वहां पे भी
कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकता है उसकी वजह से भी. So counseling, the fertility counseling has a vast area. It covers different kind of counseling aspect, like implication counseling, support counseling, decision making counseling. Sometimes it covers grief counseling also when there is history of miscarriages and pregnancy losses. काउंसलिंग से डायरेक्ट बेबी तो नहीं होता है, इसीलिए काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बिकॉज़ ट्रीटमेंट लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल इन कंसेप्शन एंड ऑल. बट काउंसलिंग से डायरेक्ट बेबी नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली it will support you, it will helpful for your emotional and mental health, जो कि आपकी कंसेप्शन में काम आएगा. काउंसलिंग plays important role when you are going for IVF treatment, because IVF treatment itself is emotionally draining. अच्छे जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल फर्टिलिटी काउंसलिंग होती ही है, because without psychological support this journey becomes very difficult. इस स्ट्रगल के लिए कोई भी कपल और कोई भी मेल और फीमेल तैयार नहीं होता है. इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस इन द लाइफ, एंड this crisis is biopsychosocial crisis, not only the medical thing, not only the physical thing, but it is emotional as well as social also. So जब हम ट्रेंड काउंसलर से काउंसलिंग लेते हैं तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे को फायदा हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन काउंसलिंग प्रोसेस व्हाट हैपेंस दैट काउंसलर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव साइकोसोशल हिस्ट्री लेते हैं, बिकॉज our fertility reproductive story starts since our teenage or an adult age. एक इमेजिनेशन होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे तैयार करेंगे, हम हमारा बेटा होगा या बेटी होगा, या हमारे 2 बेबी होने चाहिए. इस तरीके का इमेजिनेशन मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स करते हैं. अब जब वही इमेजिनेशन उस ड्रीम में प्रॉब्लम आती है तो देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्ट नेगेटिव इमोशंस couples feel, like disbelief, guilt, isolation, and you bottle up all those emotions. So in counseling session what happens, that catharsis happens. Catharsis is a therapeutic process where emotional discharge of all difficult emotions happens. Usually कभी भी कुछ भी हमारा प्रॉब्लम होता है, एंड इफ वी ट्राई विथ अवर डियर वंस, हम व्हेन वी क्राई इन फ्रंट ऑफ अवर फ्रेंड और विथ पार्टनर, तो क्या होता है, रो मत, एंड दे ऑफर यू टिश्यू कि नहीं नहीं प्लीज डोंट क्राई. In catharsis what happens, your counselor will not stop you. Tears will come, it's perfectly fine. So catharsis happens, आपकी psychosocial history ली जाती है, and assessment, the psychological assessment is very important when you are going for the IVF or ART treatment.
every individual is different, and if there is any kind of psychopathology तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है. सपोज एंग्जाइटी इज नॉर्मल एंड नेचुरल, but if it is anxiety disorder, there are two kinds of anxiety, like state anxiety and trait anxiety. State anxiety is normal, and trait anxiety can convert into some kind of psychological disorder. State anxiety में क्या होता है, when you are going to uh, for any kind of treatment, or you are waiting for your report, you are visiting doctor, you will feel anxious. That is a specific anxiety. During doctor's visit, you are feeling. It's perfectly fine. But trait anxiety में क्या होता है? Your anxiety is free floating. Since morning till night, you are feeling anxious. Anxious thoughts are coming, which is not healthier at all. तो आपकी एक प्रॉपर असेसमेंट होता है. इफ इट इज फाइन, यू आर नॉट मच, सी, थोड़ा थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा सैडनेस, थोड़ा डिप्रेशन तो होगा. You can manage it. A counselor can give you some kind of tools to manage it. But if there is psychopathology, definitely you need some kind of advanced intervention, maybe medical treatment also. But काउंसलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं और मेनली जाते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए. आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी आपको एक मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत होती है. अब वो मेंटल प्रिपरेशन कैसे होता है? द काउंसलर कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर यू मेंटली एंड इमोशनली विद अ रियलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज रिजल्ट इज अनसर्टेन. तो उसके लिए आपको रेजिलेंस बिल्ड करना होता है. थ्रू काउंसलिंग help, counselors help, you can build hope, you can build resilience. Please feel free to ask any kind of queries if you have. I'm just giving you the overall idea what actually the counseling is, how it helps in your fertility treatment, because अभी भी counseling is like taboo, और लगता है कि we don't have any mental emotional problem, why we should go for the counseling. इस जर्नी में थोड़ा बहुत, अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरी पर्सन इज डिफरेंट. बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको कि दे हैव साउंड मेंटल स्टेबिलिटी when they are going for treatment. They might not require more counseling session, but single brief session is advisable for everyone. At least आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ पर हैं. Are we in a good psychological state? Are we able to go for the ART treatment or not? And this counseling is ongoing support also, because आज आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, maybe tomorrow you will feel low, you will feel down. So through counselor support, you can make your own self टूल्स, जिससे कि आप अपने आप से खुद बेटर कोप कर सकते हैं. बिकॉज इन दिस जर्नी यू फील डिस्ट्रेस्ड, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस जो कि कभी पहले आपने नहीं फील किए हैं, बट नाउ यू फील, एंड यू फील इट्स नॉट फेयर, हाउ आई कैन फील जेलस. Sometimes you feel jealous, sometimes you feel resentment, but फिर आपको लगता है कि no, I'm not a bad person, how I can think like that. So through counselors help, you can understand whatever you are feeling, any emotions, these are very normal, natural and valid. अकेले क्या होता है कि आपको लगता है कि I should not think like that, or am I a bad person?
तो अकेले में you feel isolated because somewhere to some extent आपकी सोशल लाइफ भी बहुत हैम्पर होती है when you are in this journey. And अपने आप से sometimes you make some kind of coping mechanism which can be healthier, which can be unhealthier also. जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी में माल एडेप्टिव पैटर्न्स. माल एडेप्टिव पैटर्न्स में आपके बिहेवियर्स भी हो सकते हैं और कॉग्निटिव भी हो सकते हैं. बिहेवियरल में आपके क्या होता है कि यू इवन डिसकंटिन्यू talking or sharing with your own dear ones. I have seen so many females who has stopped talking to their parents also, which is maladaptive behavior, which is not healthier at all. जब आप काउंसलर के पास जाते हो, आप अपने बारे में बताते हो और काउंसलर टेक योर साइकोसोशल हिस्ट्री, तब समझ में आता है कि दिस इज नॉट गुड. कुछ सपोर्ट सिस्टम की आपको जरूरत है. Please feel free to ask any kind of questions. I'm just explaining how fertility counseling can help you in your fertility journey and you can have your bundle of joy. Because hopelessness, helplessness, worthlessness is very prominent in this journey. आपको लगता है कि no one can help me. The future seem very dark. Nothing can happen. And you blame yourself, the feeling of worthlessness. Through counseling, you can understand all your feelings are valid and how you can cope with the situation and how you can be hopeful. As I told you, counseling plays very important role in this journey and it takes a different kind of role. Like your interpersonal skills get impaired because आपको सोसाइटी सोशल गैदरिंग में जाने में डर लगता है और यू डोंट फील कॉन्फिडेंट. थ्रू काउंसलर्स हेल्प यू कैन enhance your social skills, assertive skill कि कैसे आपको communication करना है, how you have to give the answer. I do a playing also because बहुत बार मेरे पास गर्ल्स बोलती हैं कि रिश्तेदार जब आते हैं गैदरिंग में तो उनको कैसे फेस करना चाहिए. And when they are ready, how they have to face them, then they are ready to go in the social gathering. और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काउंसलिंग का रोल होता है, एक वन ऑफ द रोल आई विल से दैट इट इज कपल काउंसलिंग, which is very important in this journey. Couples sometimes they come together and sometimes they drift apart due to this struggle. बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं because female and male both have a different kind of coping mechanism and they feel this pain in a different way. Both male and female experience in a different way due to different traits. Males focus on the problem focus technique, like डॉक्टर के पास जा तो रहे हैं, अच्छा फेलियर हो गया तो क्या, we will try for the next. But female wants some kind of emotional support. जब वो पार्टनर से नहीं मिलता है तो फिर प्रॉब्लम आती है. एंड males have not idea how they have to handle their wife. करना क्या चाहिए, क्योंकि they are also in pain. They don't want to talk.
So many misunderstanding happens between the couple. सो काउंसलिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कपल्स अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेटर बना सकते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कभी कभी क्या होता है, देयर इज नो एनी ऑर्गेनिक और डिसऑर्डर काइंड ऑफ थिंग, बट रिप्रोडक्टिव फंक्शन इज क्वाइट फाइन, बट उनका सेक्सुअल फंक्शन इज नॉट डूइंग प्रॉपरली. उनका प्रॉपर इंटरकोर्स ही नहीं हो पा रहा है. दे हैव सम काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर, और बात करने में उनको शर्म आती है, एंड दे डोंट फील लाइक टॉकिंग, और हेल्प लेने से भी घबराते हैं कि नहीं, और एंड दे थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर इन देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जबकि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होता, उनके सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और they don't feel like having proper physical intimacy. बहुत ज़्यादा there are so many cases I have seen that after having sexual counseling, they are having good proper sexual relationship, and trying for conceiving also. So sexual counseling, couple counseling is a part of fertility counseling. And when you are going for third party reproduction, so you need this counseling surely, because everyone wants wish for the genetic connection with the child. But if it is not happening, there is a lot of resistance and apprehension to opt for the third party reproduction. So through counselors help, you can take an informed decision, because जब हम हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, बिकॉज काउंसलिंग इज वेरी सेफ एंड नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म एंड वेरी कॉन्फिडेंशियल. सो जब आपको एक नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ की आप बहुत ढेर सारी अपनी सारी वल्नरेबिलिटी, सारी वीकनेसेस, इनर मोस्ट फीलिंग्स you can express, and even you can explore your own thoughts, feeling, behavior, because all are interlinked. तो मैं ये मेरा ये थॉट है, ये फीलिंग है, ये बिहेवियर, इज इट वैलिड और नॉट, ये भी आपको काउंसलर से मिलने के बाद समझ में आने लगता है. सो आई मीन टू से दैट काउंसलिंग हेल्प्स इन सेवरल वेज. कभी क्या होता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, you accept the situation and you are very hopeful for the treatment, you are very hopeful for the that you will become mother, you will have baby, but you have your work stress, you have your relationship stress, so it impacts your fertility also. So apart from this fertility issue, जो भी आपका current और past issue रहा है, because our past also impacts our current. I have seen so many emotional or subconscious belief system pattern which hampers your fertility also. जब आपको काउंसलर के पास ये सब बातें करने का मौका मिलता है, तो यू स्टार्ट शेयरिंग सो मेनी थिंग्स, जो कि आपको फिर समझ में आता है, ओके, दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, and which might hamper your further fertility also. And unfortunately, what happens sometimes, miscarriages, or you have lost your baby, तो वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ग्रीफ होता है. बट रादर देन फोकसिंग ऑन दैट ग्रीफ, यू ट्राई टू यू एम्बार्क इन द आईवीएफ जर्नी. पहले जो पास्ट ग्रीफ हैं और जो पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है.
Through counselors' help, you can resolve your grief, past grief. और कभी कभी पास्ट गिल्ट भी होता है, तो वो भी आपके करंट फर्टिलिटी को हैम्पर करता है. सो इन काउंसलिंग सेशन यू हैव opportunity to explore your own belief system, own thoughts, feelings. It is non-judgmental platform where you can vent out anything or everything. So I will encourage you कि एक बार आप एक सिंगल सेशन करके देखो, बिकॉज बेसिकली काउंसलिंग इज अ टॉक थेरेपी. तो लगेगा कि टॉक थेरेपी है तो फिर हम जाके इसको जरूरत क्या है काउंसलर के पास जाने की. वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड, वी कैन टॉक टू अवर डियर वंस, बट प्रोफेशनल काउंसलिंग इज समथिंग डिफरेंट. एंड देखो, जब आप अपने डियर वंस के साथ बातें करते हैं तो क्या होता है, अगला आदमी भी आप रोने लगता है. उस आपके आंखों में आंसू आते हैं तो दूसरे के आंख में भी आंसू आते हैं, और वहीं पे वो आपकी प्रोसेस हिंड्रेंस हो जाती है. बट व्हेन यू स्पीक विथ trained counselor in a non-judgmental way, you will find some kind of tools कि मेरे को एंजाइटी होती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू कॉन्फ्लिक्ट फॉर एनी मेल, फॉर एनी फीमेल, फॉर एनी कपल. Your mind is dominated by so many negative thoughts and emotions. Weird आपके thoughts आते हैं कि if I will not have baby, my husband will leave. और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं. आपका past belief system बहुत important होता है. So there is always opportunity to relearn the things, because this is not only the medical condition, it is constructed by our cultural, social, even sometimes religious reality also. So जो आपने पहले देखा होता है उसी पे आप बिलीव करते हो. जैसे कि बोला जाता है कि आफ्टर 30 तो बेबी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है, एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में रहता है. बट इट इज नॉट अ फैक्ट. Even if it is a fact, can you do something? Can you reverse your age? You cannot. But you can do something. You can uh, do some kind of, you can lead good lifestyle जिससे कि आपकी fertility enhance होती है. And when you go for the IVF treatment, आप क्या जाते हो कि आपको लगता है कि now we are going for the treatment, बस things will fine. बट IVF ट्रीटमेंट इज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस. जब आप काउंसलर से मिलते हो, आप काउंसलिंग लेते हो, देन यू रिमेन सेल्फ अवेयर एंड यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द प्रोसेस. बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि आपको खुद से काम करनी होती है. आपका लाइफस्टाइल, आपका बिलीफ सिस्टम. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू assess yourself and to enhance, to optimize the chances of your treatment. And if you are not taking treatment, everything is fine, there is only the problem in the relationship, so counseling, the couple counseling plays important role. इस फर्टिलिटी काउंसलिंग में भी इंडिविजुअल काउंसलिंग, मेल का अलग, फीमेल का अलग, एंड कपल काउंसलिंग, conjoint session. So hope I'm able to explain how counseling plays important role. Please feel free to ask any question, any query, because in this journey, anxiety, sadness, frustration, depression,
desperation is very normal and natural. And sometimes what happens, you feel unusual emotions and unusual behavior also. कुछ ऑब्सेशन भी डेवलप हो जाता है. You try to check your this pregnancy test. You are doing again and again and again. एक एक दिन भी अगर आपका पीरियड लेट हो गया, और यू स्टार्ट गूगलिंग ऑल द टाइम. आप ऑफिस में भी हो तो आप गूगल कर रहे हो कि व्हाट. सो अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल ऑब्सेशन कैन ऑल्सो डेवलप. सो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे, हाउ यू हैव, द मेन एम ऑफ द fertility counseling is to maintain your subjective well-being. Every individual is different, every personality is different. जब तक आप खुद अच्छा फील नहीं करोगे, दो द कंडीशन, द सिचुएशन इज डिफिकल्ट, बट उसको, अब उसको वर्स बना दे या उसको बेटर बनाए, इट इज इन योर हैंड. सो थ्रू काउंसलर्स हेल्प यू कैन मेक द सिचुएशन बेटर. अदरवाइज अकेले में क्या होता है, यू फील वल्नरेबल, यू फील वीक, और एंजाइटी और सैडनेस और ज्यादा बढ़ जाती है. As I told you, every person is different on the pace, because every counseling session is tailor based, customized session. Maybe किसी को एंजाइटी टूल कुछ अलग दिया गया है, किसी को बोला कि आप जर्नलिंग कर लो, बट बहुत लोगों को लगता है कि नो, आई डोंट वांट टू राइट. किसी को मेडिटेशन बोलते हैं, तो अगर किसी को लगता है नहीं, मेरे आंख बंद करते ही मेरे को बेचैनी होती है. सो आपका जो सेशन होता है वो बहुत कस्टमाइज्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर वेरी इंटीमेट इमोशनल नीड्स. सो एक बार काउंसलिंग सेशन, एक सिंगल सेशन लेके आप देखो कि कैसे काउंसलिंग हेल्प करती है. प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस. I'm taking question now. We start losing interest in everything we used to enjoy, and losing interest in own self also. How do you deal with it? Anisha. Anisha, earlier you used to take interest in the activities. Now you have lost interest. It is called anhedonia. It is a indicator of depressive symptoms. आपको फोर्सफुली, कॉन्सियसली, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, आपको, यू नीड, अगर आप चाहें तो यू कैन टेक अ सेशन विद मी. देन एज आई टोल्ड यू ऑन द, बिकॉज आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर क्यों पहले और कौन सी चीजें थी जिसमें कि आप इंटरेस्ट लेते थे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड, इफ यू वांटेड टू डू शॉपिंग, अब वो आप शॉपिंग अच्छा नहीं लगता, या आप म्यूजिक सुनना अच्छे नहीं लगता, कुछ भी. I'm just giving you the generic intervention here, but for the customized session, you can enroll or you can take a session with me. Own self, interest in own self. देखो, सबसे पहले तो आपको, you have to connect with your own self. Self awareness is very important. Check with yourself, what is happening with me, मेरे साथ हो क्या रहा है. And then make all the list जो आप पहले करते थे. गाना सुनना अच्छा लगता था, और भी जो भी चीजें थी. एंड देन टेक वन स्टेप एट वन टाइम. ये नहीं कि आप सारी चीजें करने लग जाओगे. स्टार्ट रिवाइविंग योर ओन सेल्फ एंड डू द स्मॉल थिंग्स. तो slowly you will start doing things which you used to do earlier.
अगर ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट prominent feature of depression. Mild moderate depression is very common in this journey. But if it is severe depression or clinical depression, you need some other kind of intervention also, maybe some medication. So, better if you are interested, we can do a session. Otherwise, as I told you, start make a list, whatever you used to do, and start doing things, and you will feel better. Hope I'm able to give you the answer, Anisha. Please feel free to ask any kind of question. So, I wanted to say that through counseling, you can build resilience, you can build hope, and you can resolve your past grief. जिन लोगों का मिसकैरेज हुआ है अनफॉर्चुनेटली एंड मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं, उन लोग को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपकी स्लीप डिस्टरबेंस है, आपकी एपिटाइट इज नॉट नॉर्मल, अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो, तो भी आपको you need some kind of assistance, at least assessment ki whether my psychological emotional health is okay or not. So I hope I am able to explain what actual the counseling is. It is a non-judgmental, safe, very very confidential platform. Welcome, Anisha. uh, इट इज़ योर चॉइस। अगर आप एक डिस्कवरी कॉल भी मेरे साथ लेना चाहोगे, एटलीस्ट आई विल एबल टू एसेस कि जो ये एनोटोनिया मैंने आपको बताया कि ये इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स। तो बिकॉज यहाँ पे आपने एक चीज़ पूछी है, इसके साथ और भी कई तरीके की चीज़ें होंगी, लाइक आपका मैंने बताया जैसे स्लीप, एपिटाइट एंड वेट. If there are some kind of changes in this also, so surely you need professional help. So I think I'm able to explain. Please think seriously how counseling helps. I can assure you counseling helps. I have seen so many success stories. और जब पहले मेरे पास लोग बहुत फीमेल्स कपल्स आते हैं, उनको लगता है कि काउंसलिंग विल नॉट वर्क, है तो टॉक थेरेपी, इससे बेबी तो हो नहीं जाएगा, बट डेफिनेटली इट विल असिस्ट यू एंड इट विल बी हेल्पफुल टू मेंटेन योर पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी में तो डेफिनेटली काम आएगा ही. I have so many success stories also, and maybe next time I'll share with you. So, thanks to all of you joining the session. इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी होती है, अभी भी मे बी आपको पूरा आइडिया नहीं हुआ होगा कि काउंसलिंग कैसे हेल्प करती है और होता क्या है इस काउंसलिंग सेशन में. अगेन आई एम ब्रीफिंग, आई एम समराइजिंग. काउंसलिंग में एक तो आपका असेसमेंट होता है, साइको सोशल असेसमेंट, आपकी हिस्ट्री ली जाती है एंड आपके माल एडेप्टिव पैटर्न्स अगर कोई है तो उसके बारे में पता होता है, एंड आपको कुछ एटलीस्ट सम टूल्स यू कैन हैव फ्रॉम काउंसलिंग जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो बाय दिस नोट आई एम एंडिंग द सेशन. Think for the counseling, at least you can take a discovery call with me, which is complimentary, and
I can assure you, you will have benefit from counseling. So, looking forward to see you in individual session. As I told you, every individual is different and intervention is also different. जो यहाँ पे आपको कुछ भी tools बताया जाता है, it is very general tool, वो भी आपके काम आते हैं, but on the basis of your specific situation, your particular personality, I will able to help you more in individual session. Wish you all the best. Hope to see you in individual session. Take care. Bye bye. Namaste.